A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a straight string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two strings. Take G is 10 into 10 meter per second square. एक सीलिंग, एक स्ट्रिंग ए बी से एक मास is suspended. This is AB and another mass 0.3 kg is suspended by another string BC. This is 0.2 kg, 0.3 kg. Suppose tension in BC is T1. ये इस मास को ऊपर की तरफ करेगा और यहाँ से ये डाउनवर्ड होगा T1. इसमें सपोज T2 एंड दिस इज T2. (0.3g) अगर ये दिस इज M1 and this is M2, तो M2g will act downward or 0.3 into 10, 3 Newton. Similarly, 2 kg will act downward 0.2 kg, M1g, that will be 2 Newton. For equilibrium of this block, upward force, no acceleration, so net force will be 0, hence T1 minus 3 Newton, M2g will be 0 or T1 is M2g or 3 Newton. इसमें जो टेंशन होगा दैट इज 3 न्यूटन. अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, इसमें अपवर्ड फोर्स इज T2 एंड डाउनवर्ड फोर्स इज T1 प्लस M1g. Net force is this. Net force is 0, hence acceleration is 0. So T2 will be T1 plus M1g. T1 is 3 Newton, M1g is this much 2 Newton, तो टेंशन इज 5 न्यूटन. जो अपर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 5 न्यूटन, जो लोअर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 3 न्यूटन.